Welcome students to Synopsis IS. I am Dr. Mohammad Zia and this is a post independence history और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग की। ऑल्दो टॉपिक थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी है। आपका ये टॉपिक आपके इकोनॉमी में भी काम आएगा। ये टॉपिक आपको obviously it's a part of history and in your social economic awareness that part also और शायद if you are lucky enough तो शायद ऐसे में भी के पेपर में भी काम आ जाए. So this is a very wide topic. Although with the scrapping down of planning commission in India, इस टॉपिक का रेलेवेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं इंडिया एज अ कंट्री की, that how India evolved as a country, in that case understanding the economic history of India is very important. And in that series only, I'm sorry, we are coming with this in the post independence history. So let us begin that about the economic planning of India. तो इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि इंसेप्शन जो प्लानिंग की शुरुआत हुई 5 ईयर प्लान्स की, ठीक है, ये शुरू हुई ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू, और क्योंकि वो रशियन सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और वहीं से एक्चुअली सोवियत सोशलिज्म जिसे हम कहें, और वहीं से उन्होंने ये आइडिया जो है वो अडॉप्ट किया. नाउ व्हाट वाज दिस प्लानिंग? प्लानिंग वाज समथिंग, क्योंकि हम 1947 में ही कहना चाहिए हम आज़ाद हुए. उसके बाद हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे फॉर ऑल दोज सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड अदर स्टफ्स ऑफ challenges. You can refer to our first video on this, India at the eve of independence. और economic planning is a term which is used to describe the long term plans of the government. Now यहाँ long term plans का मतलब है कि बहुत लंबे वक्त के लिए एक हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए थी जो कि इमीडिएट भी इश्यूज को सॉल्व करे, और it should put India on a path of development. Why this economic planning was done? This economic planning was done in order to achieve the economic growth, reduction in economic inequalities, balanced regional development, modernization, and reduction of unemployment. So basically, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को एक तरीके से और क्लासिफाई करें, so these were the challenges, rather economic challenges before India at independence. क्योंकि हमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम मिला था जो बहुत ज़्यादा रॉटन था. हमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम मिला था जो कि बेस्ड था एक्सप्लॉयटेशन पे, जो वेलफेयर की बात नहीं कर रहा था. हमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम मिला था जो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहा था. सो व्हाई वी नीडेड this planning? The reason for that is when India gained independence, its economy was obviously, we had no economy. मतलब हमारे पास कुछ था ही नहीं. What we had was a partition. What we had was a refugee crisis. What we had was a lack of trust among the people. 550 plus princely state consolidated into one country, and 200 years of economic, social, political, all kinds of exploitation that you can imagine that has been done. So British actually left Indian economy in a crippled situation, and at that time जो हमारे कंट्री के फाउंडिंग फादर्स थे और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे एक ऐसी क्रिपल्ड इकोनॉमी को ट्रैक पे लाया जाए. तो उसका सॉल्यूशन मिला 5 ईयर प्लान में कि हम 5 साल के प्लान्स बनाएं और उन्हीं ग्राउंड्स पे जो है हम डेवलपमेंट को चलाएं. अब सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत थी, सबसे पहला था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. नाउ व्हाट इज दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी? कि एक स्पेशली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता था कि क्योंकि तब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बैंकिंग नहीं थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात नहीं थी, तो वहाँ क्या हो रहा था, मान लो किसान ने कर्जा लिया,
अब किसान ने जो कर्जा लिया है वो कर्जा उसने किसी बैंक से या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया। वो जो उसने कर्जा लिया है वो उसने लिया है गांव के महाजन से, अनऑर्गेनाइज्ड कह लो या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, वहां से उसने लिया है। और सबसे बड़ा इशू जो था, जो ये गांव के महाजन से या जो भी इस तरीके के मनी लेंडर्स होते थे उनसे कर्जा लेने का, कि दे यूज टू चार्ज एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हेन दे यूज टू चार्ज दिस एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो जाता था कि द इंटरेस्ट अमाउंट वाज इवन हायर देन द प्रिंसिपल अमाउंट। और ऐसा करते करते कंडीशन ये आ जाती थी कि किसान और या जो भी गरीब इंसान जिसने उस अपना कर्जा लिया है, वो ही यूज्ड टू गेट ट्रैप्ड इन दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वो कभी भी इस चक्रव्यूह से, अगर बहुत सिंपल जबान में कहें तो कभी भी वो इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाता। पहली चीज। दूसरी चीज, जो दूसरा बड़ा चैलेंज था हमारे आगे, दैट वाज फॉरेन ट्रेड। अब ये बड़ा चैलेंज क्यों था? क्योंकि इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, जो ब्रिटिशर्स आए थे वो फॉरेन ट्रेड के नाम पे ही आए थे। और हमने उसके बाद देखा, वी हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मोर देन 300 इयर्स, किस तरीके से उनके ट्रेड ने हमें यू नो कॉलोनी बना के रख दिया, एंड दैट लेड टू अ सीरीज ऑफ further a series of economic exploitation. Now in that scenario, और एक फॉरेन ट्रेड उस कंट्री के लिए भी चैलेंज था जो कि अभी अभी आज़ाद हुई है, उसको अपना एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जनरेट करना था जहां दुनिया के दूसरे मुल्क जो है वो उस पर भरोसा कर सकें। उनको एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जनरेट करना था जहां वो इस काबिल बन सके कि वो फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। देन देयर वाज अ नीड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से ताल्लुक ये है कि अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा एक तरीके से उनका प्लान था, अच्छा इन द सेंस उनके लिए अच्छा, हमारे लिए नहीं। उनका प्लान ये था कि हम जो है रॉ मटेरियल्स वो हमारे यहाँ से लेते थे, इंडिया से लेते थे, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो दूसरी चीजें हो, और वो उस सॉरी वो उस रॉ मटेरियल को जो है वो इंग्लैंड ले जाते थे। वहाँ उनके पास इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले ही आ चुका था, और उन इंडस्ट्रीज में वो उसे कन्वर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स में और वापस वो इंडिया लाते थे। इसलिए इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में डेवलप नहीं थी। लेकिन अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है, फॉरेन ट्रेड की बात करनी है, और आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी, जो कि एक बड़ा चैलेंज था पॉलिसी मेकर्स के सामने। फिर पॉपुलेशन का प्रेशर था। पॉपुलेशन का प्रेशर यूं था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट था, रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत बड़ा था, माइग्रेशन बहुत ज्यादा था, और लार्जली एक्चुअली हमारे देश के लोगों को ये लग रहा था कि आज देश आजाद होगा और कल हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। क्योंकि हमने जो सिस्टम इनहेरिट किया था, या जो सिस्टम एक्चुअली हमें मिला था, वो बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से, आई एम यूजिंग द वर्ड डिसेबल्ड, बट यस इट वाज। तो लोगों को ये बहुत ज्यादा था कि अब भारत की सरकार है, भारत सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई है, which is being elected by the people, now they are going to do something for us. Then development of natural resources, which is written here. I'll write it again. You may not be seeing it properly, but this is development of natural resources. Now this development of natural resources, why this was important, why this was a challenge? क्योंकि अंग्रेजों ने कभी होने नहीं दिया। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, उसे डेवलप नहीं किया, and there is a huge difference between the both. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मींस कि उससे उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट कमाया, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन किया नेचुरल रिसोर्सेज का। नाउ इसी चीज को ध्यान में रखते हुए
Planning Commission was set up on 15th March 1950 with Prime Minister. Obviously, Prime Minister was the ex officio chairman of the Planning Commission, or it formulates the economic policy. So, what was the function of Planning Commission? Was the economic policies and the drafts regarding 5 year plan. उन्हें ये बनाना था. There was a deputy chairman of a cabinet minister rank, and Prime Minister was the ex officio chairman. Now, what this Planning Commission was supposed to do? First of all, to estimate the physical, capital and human resources of the country. तो सबसे पहले हमें ये देखना था, प्लानिंग कमीशन का काम ये था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, जो कुछ भी अवेलेबल है, all the economic resources that are available, so they have to look after that. Then they needed to prepare a plan for making effective and balanced utilization of human resources. ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोग जो है वो एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रहे थे सरकार की तरफ कि ये एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें. टू डिटरमाइन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग. सो टू डिटरमाइन various stages of planning. Now, when you're talking about various stages of planning, तो planning का मतलब ये भी नहीं था कि आज जो है ये 5 year plan बना और कल जो है हम develop nation, because this is going to be long process. This was a long process indeed. और आज भी हम developed की stage पे नहीं आए हैं, और कब आएंगे this is still a question mark. But हम developing हैं, हम fastest growing economies में से एक हैं. तो अगर आज आप 2020 में लेट्स से भी ख़त्म होने वाला है, अब 2021 में अगर आप एक फेज्ड अगर आप एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इसका प्रोसेस कोई 2010 में या 2015 में शुरू नहीं हुआ. दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस. व्हेन यू आर such a huge, when you are the 7th largest country in the world and you are having the 2nd largest population, this is never going to be an easy task. Then another, to indicate those factors to the government which check the economic development, to advise the center and the state governments on special matters referred. So these were largely the functions of the planning commission. Now, we talk about the first 5 year plan. The first 5 year plan was from 1951 to 1956, और ये जो है इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिकंस्ट्रक्ट द इकोनॉमी. वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स एंड what was achieved. This will be the whole pattern that we are going to study in this part. So objectives were to reconstruct the economy which was damaged as a result of the Second World War. So reconstruction of war damages, this was the first thing. Then food production capacity को बढ़ाना था. Inflationary tendencies means जो बहुत ज़्यादा price rise हो रहा था because of all the factors, partition, migration and everything. We have to check that inflationary conditions, inflationary tendencies. उसके अलावा to improve the living standards of the people of India. बहुत बड़ा एक टास्क, कहने को बड़ा आसान सा लगता है और एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ लगती है कि to improve the standard of living, but in itself it's a big. Then targeted growth in the GDP. There was targeted GDP was 2.1% every year. I can imagine, हम तब इतना सोच भी नहीं पा रहे थे. हम कह रहे थे ठीक है, हम अगर 2.1% पर ईयर के स्पीड से भी ग्रो करेंगे तो इट इज वे मोर देन इनफ. देन क्या क्या अचीव हुआ? Something which was very much important and very much motivating for the planning itself was that instead of 2.1, 3.6%. So what was the target? 2.1 was the target, but what we achieved was the 3.6%. Important irrigation projects like Mettur Dam, Hirakud Dam, Bhakra Dam, ये सारे dams बने. WHO with government addressed children's health and reduced infant mortality and indirectly contributing to the population growth. ये एक बहुत बड़ा वो था.
Efforts were taken in improving post and telegraph railway services, road, tracks, civil aviation, etc. UGC was set up. So, education for funding of the higher education of the country. Contracts were signed to start 5 steel plants. So, डैम्स बनते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी यहाँ पे, डब्ल्यूएचओ के साथ कोलैबोरेशन में इन्फेंट मोर्टालिटी को चेक कर रहे थे, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, रोड्स, सिविल एविएशन, इसको इम्प्रूव कर रहे थे और करा। हायर एजुकेशन को फंडिंग को चेक करने के लिए यूजीसी वाज सेट अप टू टेक केयर ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइन। सो 5 नए स्टील प्लांट्स जो हैं वो बनने थे। सो उसकी शुरुआत होती है। सेकेंड मॉडल जो था, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, इट वाज based on the Mahalanobis model, or this was propounded by a famous statistician, Professor P.C. Mahalanobis, in the year 1953. And it actually addressed various issues that were related to economic development. But I'm sorry. I'm sorry. But the जो इसका पूरा फोकस था इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का, इट वाज ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट बूस्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स और पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना था। अभी भी हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर। टारगेट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय 25% एंड ग्रोथ रेट अगेन 2.1% ही रखा, इंस्टेड ऑफ achieving higher growth rate in the last 5 year plan, means from 1951 to 56. In spite of that also, we kept a very achievable target, means हम अभी भी reality में जी रहे थे। Then what was achieved in the second 5 year plan? So the 5 steel plants, hydroelectric plants and steel, Bhilai, Durgapur, Raulkela, Jamshedpur, they all were set up. कोल प्रोडक्शन बढ़ा, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे लाइंस जो है एडेड हुई, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, होमी भाभा चेयरमैन थे। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज बॉर्न, ग्रोथ रेट ऑफ 3.6%। अगेन हमने 2.1% टारगेट किया, हमने 3.6% अचीव किया। नेशनल इनकम हमने जो बात की थी कि हम यहाँ पे नेशनल इनकम को 25% से 25% से बढ़ाएंगे, वो हम 18% तक। बट देन ऑल्सो दिस वॉज a very promising, बड़ा ही अच्छे रिजल्ट्स अगर हम कहें तो हमने अचीव किए इसमें। थर्ड प्लान स्ट्रेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, सेकेंड प्लान स्ट्रेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल हेवी इंडस्ट्रीज, थर्ड प्लान स्ट्रेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। लेकिन इसी दौरान वी हैड 2 wars during this time period of 1961 to 66. One was with China in 1962 and another was with Pakistan in 1965, और हमारी इकोनॉमी की जो वीकनेस थी वो एक्सपोज हुई, और हमारा जो सारा कहना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सारी जो फंडिंग्स एंड एवरीथिंग दैट ऑल शिफ्टेड टुवर्ड्स डिफेंस, और वॉर लेड टू इन्फ्लेशन। क्योंकि हर वॉर की कॉस्ट होती है। देखो, कहना बहुत आसान होता है, मैंने हमेशा कहा है, ये कहना बहुत आसान होता है कि हम इस पे वॉर कर देंगे, हम उस पे वॉर कर देंगे, बट इन रियलिटी ना, यू कांट इवन थिंक ऑफ दैट। क्योंकि इकोनॉमिक, स्पेशली आज की बात करोगे, आज के हिंदुस्तान की बात करोगे, तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। व्हेन योर जीडीपी इज डाउन बाय 8%, ओवरऑल ग्रोथ 1-1.5% की प्रोजेक्टेड है, उस कंडीशन में ये कहना कि हम वॉर कर देंगे और हम देख लेंगे, तो नहीं कर सकते। दैट इज वाई चाइना के साथ हमारा बॉर्डर पे फेस ऑफ भी होता है ना, तो वो भी नेगोशिएशन से और डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ना कि वॉर के जरिए। खैर, यहाँ अब हमने, क्योंकि हमने 2 5 ईयर प्लान में बड़ा अच्छा अचीव कर लिया, और तो हमने सोचा कि ठीक है, वी हैड वेरी ऑप्टिमिस्टिक targeted growth rate of 5.6%। नेशनल इनकम को 5% बढ़ाना था, लेकिन कुछ भी एज सच नहीं हुआ, बिकॉज थर्ड प्लान वाज अ बिग फेलियर, क्योंकि वॉर एंड ड्रॉट, और एक्चुअली हमने आधा अचीव किया।
लेकिन during the last year, means during 1955 to 66, green revolution attracted that attention. Fertilizer plants, क्योंकि अब हम बात कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन की या हाई यील्डिंग वेराइटीज की, और केमिकल फर्टिलाइजर्स are a very important component of these 5 year this high yielding varieties. जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो हमें फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की भी बात करनी थी. सो दिस फर्टिलाइजर प्लांट्स वर बिल्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंटिन्यूड. एंड पंजाब, जो कि one of the largest, one of the biggest agrarian state of the country, in terms of per capita income availability to the farmer, I'm talking, it used to started actually producing abundance of wheat. Actually, this whole belt of Punjab, Haryana and Western UP जो था वो सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग और सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसी ने ग्रीन रेवोल्यूशन का लिया तो वो इन्हीं स्टेट्स और इन्हीं रीजन्स ने लिया. Primary school, secondary education boards or state electricity boards were formed. So, but overall, if you will see the figures and the uh, you know data which was available for this third 5 year plan, that was a failure based on data. Well, आगे बढ़े. Then there was a plan holiday क्योंकि severe drought थी 1967 से 69 तक. थर्ड प्लान 5 year plan जो है वो it failed, and this led to the postponement of the fourth 5 year plan. Then there were 3 annual plans, and during these plans 1967 to 69 a new agricultural strategy was implemented as क्योंकि यहाँ अब जो है जो हाइल्डिंग वेराइटीज थी उनका इम्पैक्ट दिखने लगा. एंड so these 3 annual plans, they were largely focused on agriculture. Then came the fourth 5 year plan. At this time, Mrs. Gandhi became the prime minister, and the first thing that she did was nationalized 14 major banks of India and Green Revolution in India advanced agriculture. लेकिन सिचुएशन इन ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वाला जो क्राइसिस था, it was becoming too much heavy burden on India, and again फिर वही चीज हुई. We had to face a war with Pakistan in 1971, and also known as the Bangladesh Liberation War, and this we'll see in the next lecture where I'll be talking about Indira Gandhi years, whatever happened during Indira Gandhi's time period that I'm going to discuss in the next video. Well, so again here targeted rate was 5.6%, लेकिन 3.3% ही achieve हुआ. Now the stress fifth 5 year plan की अगर हम बात करें 1974 to 79, so stress was laid on employment, poverty alleviation और गरीबी हटाओ का जो है वो नारा आता है इस 5 year plan में. एंड ये इमरजेंसी का भी टाइम पीरियड था तो वो भी हम देखेंगे. नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, सेल्फ रिलायंस की बात होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिफेंस में. फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है नाउ 118 मिलियन टन्स due to certain improvement in infrastructure and other facilities. Yes. Then from 1978 to 80, a newly elected government, Janta government popularly known as, rejected the fifth 5 year plan. इसलिए हमने उसके achievements की ऐसे ज़्यादा बात नहीं की. And फिर एक रोलिंग प्लान्स आते हैं 1978 1980. फिर 1979 में इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट बनती है और फिर वो उसे रिजेक्ट कर देती है. अल्टीमेटली वी केम टू द सिक्स्थ प्लान. Sixth plan 1980 to 85, or obviously the plan was started, but in between Rajiv Gandhi was elected as the prime minister because of assassination of Mrs. Gandhi, and यहाँ पे rapid industrial development की बात होती है, IT की बात होती है, and sixth plan also marked the beginning of economic liberalization. Family planning was implemented for the first time in India. Targeted growth rate was 4.4%. Achieved was 5%, which was great.
डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, नाबार्ड इसी दौरान बना, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। सो आज की जितनी भी मॉडर्न इंडिया की है, मॉडर्न इकोनॉमिक जो हमारी पॉलिसीज हैं, उनका जो भी आप देख रहे हो, that is all was launched during these time period. Then we talk about the seventh 5-year plan. Was the main objective was to establish growth in production of food grains, employment opportunities, क्योंकि ये बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा दौर था, introduction and application of modern technologies, improved facilities for education to girls, increased productivity of small and large scale farmers. So 89 में भी, जैसा अभी किसान आंदोलन चल रहा है, 89 में भी इस तरीके का किसान आंदोलन था। 87 89 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तब भी हरियाणा, पंजाब से और वेस्टर्न यूपी की तरफ से किसानों ने जो है दिल्ली मार्च किया था। दैट वाज ह्यूज। उसी तरीके का कुछ अभी हो रहा है। वेल, I'm planning to make a separate video of the 3 farm bill that I'll give you in very short duration of time. So ये जो 7th प्लान था वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब देखो ना कितना चेंज आया है। एक कंट्री जो फर्स्ट 5-year प्लान में बात कर रही है कि हमें एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फर्स्ट 5-year प्लान में बात कर रहे हैं कि हमें फूड ग्रेन्स उगाना है, हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। आज 7th 5-year प्लान पे जब वो आते हैं तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। वो एजुकेशन की, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल की बात नहीं कर रहे हैं, वो एजुकेशन टू गर्ल्स की बात कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि हम इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी शुरू कैसे करें। ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, पहले हम ये सोच रहे थे कि हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे बन जाएं। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज स्केल फार्मर्स. So you see how the targets are changing, and that reflects that yes, your country was on a developing path. It is, I'm quoting a former Prime Minister, uh, late Atal Bihari Vajpayee, and he said in Parliament that it would be wrong कि अगर हम ये कहें कि पिछले, क्योंकि this was in 97, 98, 99 somewhere at that point of time, तो उनका ये कहना था कि ये बेईमानी होगी कहना कि पिछले 50 साल में कुछ नहीं हुआ। और अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप उन इंजीनियर्स, उन मजदूरों की, उन टीचर्स की, उन साइंटिस्ट की, उन सारे तमाम लोगों की मेहनत को पे पानी फेर रहे हैं, या आप उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं जिन्होंने देश को बनाया। सो ये कहना कि पिछले 50 साल में या आज के टाइम के कंटेक्स्ट में बात करें कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये बहुत एक गलत नोशन है। बहुत कुछ हुआ है। आज यू आर अ फूड ग्रेन एक्सपोर्टर। 1950s में हम गेहूं कहाँ से मंगाते थे? अमेरिका से। वो भी वो भीख मांगने जाना पड़ता था कि भैया दे दो, खाने के लिए नहीं है। और what they used to give, the feed that they used to serve their pigs, वो भी नहीं देते थे ढंग से हमें, वो भी बहुत ही बुरा आता था। वहां से अगर आज कोई देश दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनता है, फूड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनता है फूड ग्रेन का, तो उसने कुछ तो किया होगा। और वो 10 साल में, 15 साल में नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। मूविंग ऑन, अचीवमेंट्स ऑफ द प्लान: फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना। द प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज हमने 6% ग्रोथ रेट टारगेट किया था, 5% टारगेट किया था, एंड वी अचीव 6%। 89 to 91 थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल था, ये भी हम देखेंगे आने वाले टाइम पीरियड में, आने वाले वीडियोस में। और 8th प्लान कुड नॉट टेक ऑफ इन 1990 ड्यू टू द फास्ट, ऑब्वियसली पॉलिटिकल चेंजिंग सिचुएशंस थी। 85 to 89 राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, फिर वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, देन इलेक्शन, assassination of Rajiv Gandhi, and then how Congress came to power and PV Narasimha Rao became the prime minister. And the most important, this is the turning point in the modern history of India, post-independent India.
क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने, जब कंडीशन इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा था, वी हैड नथिंग, कोई गल्फ में वॉर चल रहा था, अगर आप इंटरनेशनल सिचुएशन को देखोगे तो गल्फ में वॉर चल रहा था, और इन सारी सिचुएशन में ही ब्रॉट अ वेरी नॉन पॉलिटिकल पर्सन टू टेक ओवर द फाइनेंस ऑफ द कंट्री, दैट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड आज अगर आप फ्री मार्केट में हो, फ्री मार्केट मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप ग्लोबल, तो ग्लोबल से लोकल वाला जो हमने ग्लोबल को जो लोकल बनाया, वो इन्हीं वो जो रिफॉर्म्स डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए, उसकी देन है। एंड इंडियन इकोनॉमी वाज ओपनड अप, एंड मतलब इंडिया वाज almost a bankrupt country. We were sitting at an edge, no, where we were, मतलब दुनिया ही हमें बैंकरप्ट बना देती, और फिर वो बैंकरप्ट कंट्रीज के साथ क्या होता है, दैट हाइपर इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग. So we were on the verge of that, and he brought us back from there. That is why he is one of the most, widely respected economist throughout the world. And this was the era of privatization, liberalization, and globalization in India. So this can also be termed the eighth five-year plan, 1992 to 97. This can be termed as Rao Manmohan model of economic development. Or the major objectives of the eighth plan was रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना था, पॉवर्टी इरेडिकेट करना था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, एंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना. इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ WTO ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ओनली, और हमने टारगेट किया था 5.6% ग्रोथ, एंड व्हाट वी अचीव वाज 6.7% ग्रोथ. Then came the ninth five-year plan, as I took just quoted late Mr. Vajpayee. So now the objective of the ninth five-year plan was social justice and equality, growth along with that. Priority was given to agriculture and rural development and accelerating growth rate of economy. Food and nutritional security for all, containing growth rate for population. This was क्योंकि अब यहाँ पे हम population explosion की तरफ आ गए थे. Empowerment of women, socially disadvantaged groups such as SC, ST, backward and minorities, इनके ऊपर भी फोकस किया गया. बहुत सी ऐसी स्कीम्स आई जो उस दौर में ग्रोथ को कपल अप कर रही थी सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ. Target was 6.5%, but somehow it could achieve only 2.1% mainly because of agriculture, जिसमें हमने 4.2% का टारगेट किया था, but the growth rate of agriculture was just 2.1%. बहुत सारी ऐसी जो योजना है जो आज भी चल रही हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना with a different name, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना obviously with a different name, इंदिरा आवास योजना with a different name. So all these ग्राम सड़क योजना, ये तो इसी नाम से चल रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. So ये सारी जो स्कीम्स हैं ये इस दौर में शुरू हुई. Now this is the 21st millennium, 21st century, I'm sorry, we're talking about. Then 10th five-year plan, 2002 to 2007 again, it was the Vajpayee government. So reduction in poverty ratio from 26 to 21%. पॉपुलेशन ग्रोथ को हमने कम करना था, लिटरेसी रेट बढ़ाना था, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना था. चिल्ड्रन, बिकॉज 6 to 14 वाज समथिंग विच, जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही थी, और ऑन द कॉन्ट्ररी दे वर एक्चुअली गेटिंग एम्प्लॉयड इन जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज और ये सारी चीजें थी. चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग था. So these were the major targets of 10th five-year plan. Growth rate of 8% was achieved, actual was 7%. Farmers Commission 2004 set up हुआ. Food security, Manrega, at that time it was Narega, later on it was Mahatma Gandhi was added to that. So ये कुछ achievements थे. Then
Planning Commission in 2003 came up with the India Vision Plan 2020. अब अब आपके सामने ये है, अब आपने देख लीजिए कि कितना हमने अचीव किया. The expected growth rate by 2020 to be 9%. 1.5% obviously. हमें एक्चुअली प्लानिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन वी आर प्लानिंग अबाउट इज थिंग्स दैट वी डोंट नो. Elimination of unemployment, illiteracy and poverty by 2020. Big question on that. A per capita income to get doubled by 2020. Present employment share in agriculture to come down from 46 to 56 to 40% by 2020. To overcome the last point, which is not visible, is to overcome the water problem in metropolitan city. On the contrary, opposite is happening. So ये vision document कितना successful हुआ, कितना नहीं हुआ, is I honestly leave this to your fine sense of judgment कि इसमें से आपको जो लगता है हुआ हो. वजह कुछ भी हो सकती है, कोविड भी वजह है. बहुत सारी दूसरे ऐसे इकोनॉमिक इवेंट्स हुए जो शायद इसके इन अकॉर्डेंस, इस विजन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थे. खैर वो कभी और डिस्कस करेंगे. देन द 11th 5-year प्लान. जीडीपी को 10% पे लाना था, एग्रीकल्चर को 4% पे ग्रो करना था. ड्रॉप आउट रेट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल 52% से 20% पे लेके आना था. सेक्स रेशियो टू 935 बाय द एंड ऑफ 11th 5-year प्लान. लिटरेसी रेट जो है फॉर पर्सन्स ऑफ एज 7 years or more to 85% लेके आना था. पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग टू 2% ऑफ द जीडीपी ड्यूरिंग द प्लान. तो ये सारे टारगेट्स थे. अचीव जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी was 9% and the actual growth rate was 8.1% in this. So 12th 5-year plan के objectives, if we talk about, is faster, sustainable and more inclusive growth. This was the tagline. So 12th 5-year plan was the last 5-year plan in this series, and it was from 2012 to 17. For growth to be more inclusive, we need better performance in agriculture, and unless and until एक estimation ये कहता था, मतलब I am talking about before corona, कि अगर हमें farmers income को डबल करना है 2022 तक, which is the mission right now, which is the vision right now, then agriculture को 10 से 12% पे ग्रो करना पड़ेगा. अगर आपको $5 trillion इकोनॉमी का साइज, तो आपका नॉमिनल ग्रोथ रेट जो होना चाहिए वो 16% के आसपास होना चाहिए. आई थिंक यू आर इन इकोनॉमी, यू मस्ट हैव रेड दैट. व्हाट इज नॉमिनल ग्रोथ रेट? नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन. सो फास्टर क्रिएशन ऑफ जॉब्स स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग, ये एक दूसरा वो था. स्ट्रॉन्गर एफर्ट्स एट हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. स्पेशल प्लान्स फॉर डिसएडवांटेज्ड एंड बैकवर्ड रीजन्स, ये भी एक. लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, 1 जनवरी 2015 को ये जो प्लानिंग कमीशन है इन बिटवीन दिस 12th 5-year प्लान, ये जो है ये रिप्लेस हो जाता है नीति आयोग से. नीति आयोग इज जस्ट, यू कैन think that this was like the think tank of policy making in India, or the objective was to evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states in the light of national objectives. So this was all about Niti Aayog. So इकोनॉमिक प्लानिंग ने क्या किया, इसने मोबिलाइज किया रिसोर्सेज को और उनको एलोकेट किया जहां जितनी जरूरत थी. ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस, रीजनल ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, जो कि हमने काफी हद तक अचीव किया. देयर वर सर्टेन टारगेट्स इन एवरी 5-year प्लान. तो वो भी एक अच्छी चीज थी. बट द मोस्ट ऑफ द प्लान्स कुड नॉट अचीव द टारगेट्स. ये भी एक रियलिटी थी कि ऑल्दो हमने हर किसी में टारगेट बनाए, लेकिन हर किसी के कुछ के अचीव किए, कुछ के नहीं किए. 12th 5-year प्लान हैज टेकन ऑफ. सो फिर भी अब नाउ इट इज नीति आयोग, एंड दैट इज वेयर I can say, if you talk about historical event, so in Indian economic history, I'll cover the last 3 prime ministers.
वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन एंड मिस्टर मोदी, उनके रिजीम को भी हम एट द एंड कवर करेंगे, क्योंकि इस दिस पॉइंट फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू कवर अप दिस पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट डिपेंडिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर. सो हम प्राइम मिनिस्टर का एक रेफरेंस मीन्स उनका रिजीम को एक रेफरेंस लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. सो दिस वाज द इकोनॉमिक हिस्ट्री विद द Niti Ayog becoming the vision and missionary of organization in our country. I end this. I hope you like the video. Do give your valuable comments that are very important for me, and also a source of motivation. Why? If you comment good, obviously every हर किसी को तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप criticize भी करते हैं, आप you're critical, your criticism is more welcome than your appreciation. Why? Because that helps us as an institute, as a faculty to improve. So do give your valuable comments. I'll see you in the next video. Till then, have a great time. Thank you so much.